Good morning, students. So we started our class on the previous day. Today is the second day of your class. Already we saw in the chapter, that is chapter first of the Hornbill, the portrait of a lady. We just saw how Kushwant Singh, the writer, narrates about his grandmother. In the previous class, I gave you 3 questions to write me a copy and send me as homework. I think a few still remains to respond to my response. So just send, those who did not send yet, please send it today itself, and the others just after viewing this video, the same day or the before next day 10 in the morning, you have to answer the 2 or 3 questions that I give and just send me in the query group. Okay. And if you are having any doubt in the portion taken and any problem in hearing or anything, so you are welcome to give the suggestions. Okay. Let's move on to the chapter, remaining portion of the chapter. So yesterday we were there. I just in the last line I just told about her silver lock. Her silver locks, that is white color hair she was having. All her hair it was white. Her silver locks were scattered untidily, so she don't comb properly. It was scattered untidily over a pale. Pale means because of old age or what to say, the face has lost all the shyness and it was little yellowish color, and puckered face, puckered means wrinkled face. Okay, so she was having wrinkled face because of her old age, which we already in the first paragraph we saw about her. She was like the winter landscape in the mountains. So all of you know how in the winter time the landscape used to be. You might have seen the mountain. You just take the example of Mount Everest in winter season. You might have seen any film or in any serials. That will be fully covered with ice. So you can say the color of that, it will be white color, completely covered with snow. It will be white in color. The same manner our grandmother, she was wearing white sari and her hair is white in color. So in completely if you see, she used to be white in color, just like a mountain. So here she was like the winter landscape in the mountain, and expanse in the large body of pure white serenity, calm. She serenity means calm, breathing peace, and she is very peaceful life she is leading, and contentment, very happy life she was having. That means this line means it refers to the calm, peaceful and serene. Serene means calm behavior of the grandmother. Is it clear all of you? Let's move on to the next paragraph. Now here, my grandmother and I were good friends. So in the village you already know that his parents left them in the village and they left to city. Now in the village, the father and the grandmother, they both were alone in the house, but only they both were in the house. My parents left me with her when they went to live in the city. So my parents left me with my grandmother when they left the city, and we were constantly together. So during that time we were together in the village. So what all help did the grandmother does to the author? Let's see. So she used to wake me up in the morning. The early morning she just wakes me up in the morning and get me ready for school. So I had to go to school. So the early morning she wakes me up to go to school. She said a morning prayer in a monotonous sing song. So in a monotonous, in a boring sound, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे होता है उसका आवाज. It was in a boring manner. While she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो वो मुझे सुबह prayer, she used to make me listen her prayer in a monotonous way so that I might listen to it and उसको मैं by heart करेगा. I listened, but वो song तो मैं listen करते हैं because I loved her voice. मैं इसका ये song में carefully listen करते हैं only because I loved her loved her voice, but never bothered to learn it. But कभी भी मैं वो song
बाय हार्ट लर्न करने का कोशिश नहीं किया। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तो समय बुक्स का इस जगह स्लेट यूज, आप लोगों ने भी जब नर्सरी सेक्शन में नर्सरी क्लास में पढ़ा तो शायद हो सकता है आपको भी लग हुआ था स्लेट यूज करने का, और न जाने कितना स्लेट्स आप लोगों ने तोड़ा भी होगा। तो इस तरह इधर उस समय बुक से भी ज़्यादा स्लेट यूज करते हैं, तो ग्रैंडमदर उनका स्लेट साफ करके दे देते। एंड देन व्हाट डज शी डू, शी वुड फेच माई वुडन स्लेट which she had already washed, तो जो ऑलरेडी वॉश किया हुआ स्लेट को उनको देते थे। एंड प्लास्टर्स, तो साफ करते हैं विथ येलो चॉक के साथ। ए टाइनी अर्थन इंक पॉट, और इंक पॉट में कुछ इंक, ठीक है, किसी मिट्टी से बना हुआ इंक पॉट से कुछ इंक देते हैं। एंड ए रेड पेन, फिर क्या देते हैं, एक रेड पेन है, एक इंक पॉट है चॉक के साथ, और ये वो स्लेट प्लास्टर स्लेट। देन टाई द ऑल इन ए बंडल, ये सबको बांधते हैं। एंड हैंड इट टू मी, ये सबको बांध करके एक बंडल करके मुझे देते हैं। एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट लेते क्या है, ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, थोड़ा मोटा स्टेल, थोड़ा बासी चपाती विथ ए लिटिल बटर, उसके ऊपर थोड़ा बटर लगा के मुझे देते थे मेरे ग्रैंडमदर। एंड शुगर, तो एक थोड़ा इतना अच्छा नहीं है स्टेल चपाती में भी, प्रीवियस नाइट को बनाया हुआ चपाती थोड़ा मोटा मोटा, उसके ऊपर थोड़ा बटर लगा के चीनी लगा के मुझे देते हैं ब्रेकफास्ट के रूप में, स्प्रेड ऑन इट। और उसको लेने के बाद वी वेंट टू स्कूल, तो मतलब है कि ग्रैंडमदर भी इनके साथ स्कूल जाते थे। इसका रीजन हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेगा। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीस विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, सो जब हम जाते तो वो अपने साथ कुछ स्टेल चपातीस रखते थे रास्ते में कुत्तों को देने के लिए, ठीक है, कुत्ते को भी वो देने के लिए कुछ चपाती अपने हाथ में रखते हैं। सो दिस इज व्हाट द हेल्प शी डज टू द ऑथर, प्लीज टेक इट डाउन। नाउ नोट इट प्लीज। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑफ द पैराग्राफ इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। माय ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, और हमेशा मेरे ग्रैंडमदर मेरे साथ स्कूल जाया करते थे। व्हाई, बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड विद ए टेम्पल, तो हमारा स्कूल एक टेम्पल से अटैच्ड है, इसलिए शी वाज अ रिलीजियस पर्सन, आपने ऑलरेडी देखा है। सो शी लव टू गो टू टेम्पल, तो एज स्कूल टेम्पल के साथ अटैच्ड थे, सो शी यूज्ड टू गो विद द ऑथर टू द स्कूल। ओके, सो व्हेन द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, तो उधर प्रीस्ट हमें अल्फाबेट्स और मॉर्निंग का प्रेयर सिखाते थे। उस समय माय ग्रैंडमदर क्या करते हैं, व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोड्स ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा, वरांडा के दोनों साइड बैठते थे, सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, एक कोरस के ग्रुप में एक साथ मिलजुल कर गाते थे। जिस तरह हम सुबह डिवोशन के टाइम में एक साथ प्रेयर गाते थे, इस तरह जब प्रीस्ट सिखाते हैं कोरस, वो लोग वरांडा के दोनों साइड बैठ के इसको जोर से दोहराते थे इन ए कोरस। So at that time what the grandmother does, my grandmother sat inside the temple reading the scriptures. So कोई religious रामायण या महाभारत जैसा कोई बुक पढ़ के ग्रैंडमदर टेम्पल के अंदर बैठे। क्लियर? When we had both finished, तो जब हम दोनों, मतलब मेरा स्कूल खत्म हो जाते हैं और ग्रैंडमदर अपना स्क्रिप्चर्स पढ़ना खत्म करते हैं, हम दोनों वापस घर चले आते। We would go back together, तो हम वापस अपना घर की तरफ आते हैं। दिस टाइम, तो वापस जब घर आते थे, इस टाइम द डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, तो जब हम टेम्पल से, और जब आपको ऑलरेडी पता है टेम्पल और स्कूल एक साथ है, और टेम्पल और स्कूल को छोड़ के जब हम वापस घर आते तो गेट के पास, टेम्पल के गेट के पास कौन होते हैं, बहुत सारे डॉग्स होते हैं। डॉग्स को मालूम है ग्रैंडमदर का टाइम, और ग्रैंडमदर के हाथ में उनके लिए चपातीस होते हैं, ठीक है। So the dogs they followed us to our home, growling and fighting, तो आपस में चिल्लाते हुए, फाइट करते हुए कुत्ते हमारे साथ साथ हमारे घर तक आते हैं। For what? Because grandmother will be feeding them. Each other for the chapatis we threw to the, जो चपाती हम उनको देते हैं उसके लिए लड़ाई करते हुए, चिल्लाते हुए वो हमारे साथ साथ हमारे घर तक आते हैं। Is it clear this paragraph? Please, my dear students, if you are having any doubt in any word or any line, you are very free to ask in the query group. You can, I will give
answering it whenever I see the message. Okay. The next paragraph. Now what happened? There came a turning point. Now till now you saw that grandmother and author, they were very good friends. Now something happened which was a turning point in their friendship. Please take note, very important part of this chapter. When my parents were comfortably settled in the city, so parents इनको छोड़ के city में गया था, और जब वो comfortably settled हो गया in the city, they sent for us, तो हमें भी लेके city पे गया. So that's a turning point in the relationship of the author and the grandmother. Can you guess why? Because village में जिस तरह होता है उस तरह का school life नहीं होगा cities में. Cities में school life will be different. They will be giving more importance to English language. Their way of teaching, उसमें religious teachings बहुत कम होगा और ये स्कूल टेम्पल से अटैच नहीं होगा. और आपको मालूम है विलेज में स्कूल टेम्पल से अटैच होने के बारे रीजन से ही grandmother was used to go with the author to the school. ठीक है, तो अभी सिटी में क्या होता है, लेट्स सी. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us, and that was a turning point in our friendship. तो वो हमारा friendship का एक turning point है. मोड आ गया. अभी देखते क्या होता है इधर. Although we shared the same room, तो हम एक ही रूम में रहते थे अभी भी. My grandmother no longer came to school with me. अभी वो मेरे साथ स्कूल नहीं आते थे, क्योंकि आपको मालूम है विलेज में वो क्यों गया था स्कूल के साथ, because to visit the temple. So here what happened, I used to go to an English school in a motor bus. So उधर village में पैदल जाते थे वो, but here the change is that he used to go in a English medium school या English school in a motor bus. There were no dogs in the streets. So village में आपने देखा उधर बहुत सारे कुत्ते भी हुआ करते थे, but इधर dogs were not found on the streets. And she took to feeding sparrows in the courtyard of a city house. So city में डॉग्स नहीं है, बट शी लव्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स. तो शी डज अपने घर पे स्पैरोस को वो खाना खिलाते थे रोजाना. क्लियर? सो आवर द पैराग्राफ इज क्लियर फॉर यू. एज द इयर्स रोल्ड बाय, सो साल बीतते गया, वी सो लेस ऑफ ईच अदर. तो जब मैं इंग्लिश स्कूल में चला गया तो आपको मालूम है शहरों का जो स्कूल उधर होमवर्क एंड स्टडीज थोड़ा हेवी होता है, तो इसके वजह से मेरा और ग्रैंडमदर का मिलना कम होते गया. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. तो शायद जाने के शुरुआत के टाइम पे जैसे विलेज में करते थे वो पहले के डेज में उनको सुबह शी यूज्ड टू वेक मी अप फॉर द स्कूल. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट. तो जब मैं स्कूल से वापस आते हैं तो जैसा आपको मालूम है अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो लोग शायद पूछ सकते हैं आपसे जो क्वेश्चन आप लोग आजकल के ज़माने के बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते, बट पुराने टाइम पे ग्रैंडमदर शी यूज्ड टू बी वेरी एंग्शियस व्हेन द ग्रैंडचिल्ड्रन कम बैक टू देयर हाउस. और कुछ से बच्चों क्या क्या पढ़ाया, आपके टीचर ने कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़ाया. तो सेम मैनर ग्रैंडमदर यूज्ड टू आस्क मी व्हेन आई कम बैक टू होम कि व्हाट द टीचर्स टॉट यू इन द स्कूल दैट डे. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स. तो मैं जब वो पूछते तो मैं इंग्लिश का कुछ वर्ड्स उनको बोलते हैं. एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. वेस्टर्न साइंस के बारे में और उसके बारे में बताते हैं. सो शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, सो शी जस्ट disliked it. That is the law of gravity, Archimedes principle, the world being round etc. दुनिया गोल है, Archimedes principle, the gravity, इसके बारे में मैं उनको बताते हैं. ये सब सिखाया मुझे स्कूल में, ऐसे में उनको बताते हैं. This made her unhappy. ये सुनकर वो थोड़ा unhappy हुआ करते थे. She could not help me with my lessons. So village में she used to help the author with the lessons. उनका डाउट्स वगैरह क्लियर करते हैं. बट इन द सिटी स्कूल में इंग्लिश वगैरह पढ़ाते हैं, साइंस वगैरह पढ़ाते हैं. हमारा ग्रैंडमदर को ये सब शी डजंट नो दैट थिंग्स, दोस थिंग्स. सो शी वाज हेल्पलेस इन हेल्पिंग आवर ऑथर. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल. और इंग्लिश स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता है शी डजंट बिलीव दैट एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, वेरी सैड दैट there was no teaching about God and scripture. मैंने ऑलरेडी बता दिया सिटी लाइफ, सिटी के स्कूलों में
गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में, रिलीजियस बुक्स के बारे में कम पढ़ाए जाते हैं। सो शी वॉज अनहैप्पी दैट ये सब स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। कुछ स्कूलों में म्यूजिक लेसन्स हुआ करते थे। तो एक दिन मैं बड़े खुश होकर ग्रैंड मदर से बोला, लुक वी आर बीइंग टॉट म्यूजिक। तो व्हाट वाज हर रिएक्शन? शी वॉज वेरी डिस्टर्ब हुआ मेरे ग्रैंड मदर। वाई? बिकॉज टू हर, अकॉर्डिंग टू हर, उनके विश्वास ये था कि टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। ल्यूड मतलब वेरी ऑकवर्ड या वेरी इंडिसेंट या वल्गर रिश्ता है म्यूजिक का। नॉर्मल लोग मतलब वो का विश्वास ये है कि म्यूजिक का इंडिसेंट पीपल या वल्गर रिलेशनशिप है। पूरा मतलब सोसाइटी में नीचे स्तर के लोगों को ही म्यूजिक से अच्छा रिश्ता होता है। सो व्हाई शी वाज वेरी डिस्टर्ब टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लेट्स एंड बेगर्स। और भिखारी लोग और हार्लेट्स मतलब प्रोस्टिट्यूट्स, सेक्स वर्कर्स। ये प्रोस्टिट्यूट्स और बेगर्स ही यूज करते हैं ये म्यूजिक। एंड नॉट मेंट फॉर जनरल फॉर, नॉर्मल अच्छा फैमिली के लोगों के लिए अच्छा चीज नहीं है ये म्यूजिक। म्यूजिक इज मेंट फॉर हार्लेट्स एंड बेगर्स और वेश्या लोग या प्रोस्टिट्यूट, द सेक्स वर्कर्स, यही यूज करते हैं म्यूजिक। ऐसा विश्वास था। जैसे पता था ना पुराने जमाने पे देवदास वगैरह यूज करते हैं म्यूजिक, ऐसा विश्वास हमारे ग्रैंडमदर। शी सेड नथिंग, कुछ नहीं बोला ये सुनने के बाद। बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, बट उनका साइलेंस से हमें पता चल रहा है कि वो इससे सहमत नहीं थे। शी rarely talked to me after that, और ये सुनने के बाद उनका मुझसे बातें करना बिल्कुल ही कम हो गया। So my dear students, I think I should wind up for the day. Now let me give you a few questions. First question, listen. What was the turning point in the relationship of grandmother with the author? I repeat the question. What was the turning point in the relationship of the grandmother with the author? Next, how did the grandmother look after the narrator in the village? How did the grandmother look after the narrator in the village? Third question, when the author announced that they were being giving music lessons, why was the grandmother unhappy? When the author announced that they were being given the lessons or given music lessons, why was our grandmother unhappy? So write all these three answers, not with the help of your friends, with the help of your book. Listen to the video properly and attempt all these three answers, and before the next day 10 o'clock should send me mentioning your class, surname, everything properly. So while sending your image, mention this is the image of the second day. Okay, thank you, have a nice day.